गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। तो लैंडस्लाइड हुई है अभी महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि 27 लोगों की जान चली गई है। और इससे जो है फोकस दोबारा वापस आ गया है कि कैसे वेस्टर्न घाट्स को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। तो जो है महाराष्ट्र असेंबली में पूछा गया है कि माधव गाडगिल रिपोर्ट के ऊपर जो है वो क्या एक्शन लिया गया है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल इशू बन चुका है। तो पहले तो हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स क्या है। एक माउंटेन रेंज है जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला के जो है पैरेलल चल रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के स्टेट्स में जो है ये चलती है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस इसको मिला हुआ है। वन ऑफ द 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड भी है। ये जो है बहुत सारे यहाँ पर आपको हाई माउंटेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। 2010 में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल WGEEP, जो कि डॉक्टर माधव गाडगिल द्वारा चेयर्ड थी कमेटी, उसको जो है अपॉइंट किया कि कैसे हम जो है वेस्टर्न घाट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब वेस्ट गाडगिल कमीशन जो है, इन्होंने पॉपुलेशन प्रेशर, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इन सब को स्टडी किया और फिर रिपोर्ट दी 2011 में सेंटर को। और उसमें रिकमेंड ये किया कि पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट रीजन को जो है आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करो। और 64% जो ये एरिया वेस्टर्न घाट्स हैं, इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया जाए। सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल प्लांट जो है, इनको स्टॉप कर दिया जाए। और जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको डीकमीशन कर दिया जाए, जिन जो अपनी जो आपके ESZ 1 में जो है लोकेटेड होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी अलाउ नहीं की जानी चाहिए। एक बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करने को कहा, जिसमें कि मतलब जो है लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करो, डिसेंट्रलाइज करो डिसीजन मेकिंग। वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी भी बनाने को कहा गया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो कि प्रोफेशनल बॉडी होगी जो इकोलॉजी ऑफ दिस रीजन को जो है वो मैनेज करेगी। लेकिन जो है बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो ऑफ कोर्स गडगिल पैनल रिकमेंडेशन को उन्होंने अपोज किया। खास करके केरला, जिन्होंने कहा कि सैंड माइनिंग पे बैन लगा रहे हो, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैन लगा रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे एम्बार्गोज लगा रहे हो, तो इससे हमारी स्टेट की इकोनॉमीज़ कैसे चलेंगी। तो 2012 में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक और हाई लेवल वर्किंग ग्रुप जो है ऑन वेस्टर्न घाट्स जो है कॉन्स्टिट्यूट किया, फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता के अंदर, कि आप जो है गडगिल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करो। अब जो कस्तूरी रंगल पैनल की जो रिपोर्ट थी, उनमें कहा गया कि सिर्फ 37%, नॉट 64% जो है एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव माना जाए। और वेस्टर्न घाट्स को कल्चरल और नेचुरल जो है रीजन्स में उन्होंने जो है वो स्प्लिट कर दिया। कल्चरल लैंड्स को जो है आप ES से डिक्लेयर कर सकते हो, उन्होंने कहा। फिर कुछ उन्होंने रेड लिस्ट में जो है कुछ जो है प्रोजेक्ट्स डाले, जैसे कि माइनिंग पे बैन लगाओ, स्टोन क्वायरिंग पे बैन लगाओ, थर्मल प्लांट्स पे बैन लगाओ। तो ये जो है रेड लिस्ट में डाला गया। ऑरेंज कैटेगरी में वो एक्टिविटीज़ डाली गई जो कि रेगुलेटेड होंगी पर बैन नहीं होंगी। ग्रीन कैटेगरी में वो चीज़ें होंगी जैसे कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़, जिनको अलाउ किया जाएगा। अब अगर हम गडगिल कमीशन की रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को कंपेयर करें, तो जो गडगिल कमेटी थी वो प्रो नेचर थी, प्रो पीपल रिपोर्ट थी, साउंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पर बनाई गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और लोकल कम्युनिटी से जो है वो इन्फॉर्मेशन ली गई थी, उसके बेसिस पर जो है वो रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसीलिए जो गडगिल जी थे, उन्होंने कहा कि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो है वो फॉल्टी है और अनसाइंटिफिक है। अगर हम स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखें दोनों रिपोर्ट्स का, तो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कहा कि कस्तूरी रंगन लेड पैनल की रिपोर्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं और उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और वो गडगिल रिपोर्ट को प्रोसेस नहीं करने वाले हैं। गडगिल जो है कमीशन, गडगिल जी जो है उन्होंने कहा कि जो फ्लड, अगर मेरी रिपोर्ट को जो है या रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो जो केरला में फ्लड्स और लैंडस्लाइड आई हैं 2018 में, वो इतनी सीवियर नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। ये भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। अब आपको पता है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर इंडिया के कुछ कमिटमेंट्स हैं, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था 2002 में, कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उसके एक्सेस को। ठीक है, इसके लिए एक्ट बनाया गया। नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, और जो है आपके लोकल बॉडी लेवल्स पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं। ठीक है। अब जो है, जो ये अमेंडमेंट बिल जो है वो क्या कह रहा है, अब आपको पता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो कहता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल या इंटीमेशन लेना पड़ेगा अगर आप कोई भी जो है बायोलॉजिकल रिसोर्स जो है जो इंडिया में ओरिजिनेट होता है या अकर हो रहा है या उसकी कोई नॉलेज है, उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो। ठीक है। लेकिन ये बिल जो है
इन एंटिटीज़ की क्लासिफिकेशन करता है कि किस किस को परमिशन लेने की ज़रूरत है, किन को जो है इंटीमेट करने की ज़रूरत है और किसको नहीं है, मतलब उनको एग्जाम्पशन किस किस को है। खासकर ये कहा गया है इसमें कि अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको अप्रूवल जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ग्रांट हो रहा है आईपीआर उससे पहले आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। एप्लीकेशन के टाइम पर आपको जो है वो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेनिफिट शेयरिंग में भी उन्होंने जो है चेंजेस किए हैं कि जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो पहले तो जो है लोकल कम्युनिटीज़ से एक्ट जो है वो कहता था कि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ डिस्कशन करके फिर जो है जो भी जो बेनिफिट जो है जो शेयर किए जाएंगे कंजर्वर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो कि लोकल कम्युनिटी है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज के जिनके पास है। लेकिन अब क्या जो ये न्यू बिल है ये कह रहा है कि जो है बेनिफिट शेयरिंग तभी की जाएगी जब अगर आप उसका कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है उस नॉलेज का या उस रिसोर्सेज का। अगर कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए बायो सर्वे या बायो यूटिलाइजेशन के लिए जो है कुछ जो है आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है तो उसमें जो है बेनिफिट शेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑफेंसेस को भी जो थोड़ा सा जो डिक्रिमिनलाइज किया गया है। पहले जो है 5 साल तक की जेल और फाइन दोनों के प्रोविज़न होते थे ऑफेंसेस के अंदर, लेकिन अब जो है वो पेनल्टी ही रखी गई है 1 लाख से 50 लाख के बीच में। अब इसका क्रिटिसिज्म यही किया जा रहा है कि जो है लोकल बॉडीज़ और बेनिफिट क्लेमर्स का जो है रोल ख़त्म किया जा रहा है, इसमें एनबीए को वो रोल दिया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे ऑफ कोर्स। फिर जो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी है जो का मैकेनिज़्म, मतलब कि कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसमें आपको प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा लोकल और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को, उस प्रोविज़न को भी हटा दिया गया है। जबकि इंडिया ने तो नगोया प्रोटोकॉल साइन किया है, उसके अंदर तो ये प्रोविज़न है कि सिग्नेटरी कंट्री को जो है इंश्योर करना है कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया गया है इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज़ का। फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो पहले जज होते थे उसको अब गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है बनाया जाएगा। तो मतलब कि जो है एक तरह से जो जजेस हैं उनका जो है रोल इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में ख़त्म करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रोल किया जा रहा है, दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टार फायर एल्गोरिदम, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। जो साइंटिस्ट हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक एल्गोरिदम डेवलप किया है स्टार फायर नाम से। ये एल्गोरिदम जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी की कितनी इंटरफेरेंस होती है जो कि एफएम रेडियो स्टेशंस, वाईफाई नेटवर्क्स, मोबाइल टावर्स एटसेट्रा निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करने में जो है हेल्प करेगा और एंटीनास को फाइन ट्यून करने में भी हेल्प करेगा। ये ऑफ कोर्स अनवांटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस सिग्नल्स जो स्पेस में होते हैं उसको भी एस्टिमेट करने में और मैप करने में हेल्प करने वाला है। तो ऑफ कोर्स इसलिए उसको आने वाले फ्यूचर जो है मिशंस, ऑर्बिट सिलेक्शन के लिए फ्यूचर मिशंस में उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस एल्गोरिदम का। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस क्या होता है? ये कंडक्शन या रेडिएशन जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के थ्रू होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस द्वारा हो, उसको जो है वो हम कहते हैं। और ये नॉर्मल फंक्शनैलिटी को डिसरप्ट कर सकती है, खासकर एक सैटेलाइट की, क्योंकि वो इंटरफेयर कर देती है रेडियो वेव्स के थ्रू। और ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को भी डिसरप्ट और डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनेस्कोस एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बायकुला रेलवे स्टेशन जो है उसको रिस्टोर किया गया है उसकी ओरिजिनल ग्लोरी पे, इसीलिए उसको यूनेस्को अवार्ड भी दिया गया है। तो ये अवार्ड जो है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ये जो है आपके यूनेस्को और नग टेंग फोंग चैरिटेबल फाउंडेशन जो है वो सिंस 2021 ये अवार्ड दे रहा है। और ये प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव हो, उन सब को जिन्होंने भी कोई पुराने हेरिटेज वैल्यू के किसी भी स्ट्रक्चर को या प्लेस को रिस्टोर किया हो, उस प्रॉपर्टी को कंजर्व किया हो, तो उनको ये अवार्ड मिल सकता है। अब बायकुला रेलवे स्टेशन 1853 में बनाया गया था। फर्स्ट ट्रेन ऑफ द कंट्री जो है यहाँ से पास हुई थी और लगभग 1.5 सेंचुरीज अगो, और इसको अपनी ओरिजिनल ग्लोरी में जो है वो रिस्टोर किया गया है गॉथिक हेरिटेज और आर्किटेक्चरल ग्लोरी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 1/3 ऑफ हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल्ड हैं आयुष्मान भारत के अंदर, वो कहा गया है कि वो इनएक्टिव हैं। लगभग 27,000 टोटल हॉस्पिटल्स हैं, उसमें से सिर्फ 18,000 के आसपास हॉस्पिटल्स ही जो है वो एक्टिव हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस स्कीम है जो कि फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है। इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में। 5 लाख का कवर पर फैमिली पर ईयर मिलता है। कैशलेस एक्सेस मिलता है हेल्थ केयर सर्विसेज का। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज़ पे, एज पे या जेंडर पे। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अफ्रीकन यूनियन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के G20 शेरपा ने रिसेंटली बोला है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का प्रपोजल कि अफ्रीकन यूनियन को भी एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए G20 का, उसको ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है बाकी के ग्रुपिंग के मेंबर्स से भी। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है, एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है, 55 मेंबर स्टेट्स हैं। इसको ऑफिशियली 2002 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका एक प्रीडिसेसर बॉडी भी होती थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो कि 1963 से चली आ रही है। ऑफकोर्स इसके एम यही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंटीग्रेशन करना अमंग अफ्रीकन कंट्रीज़ में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर सिचुएटेड है, अदिस अबाबा, जो कि इथियोपिया में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 26 जुलाई को कंजर्वेशन इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इसको 2015 में अडॉप्ट किया गया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को द्वारा। और इस दिन जो है अवेयरनेस जनरेट की जाती है मैंग्रोव इकोसिस्टम्स के बारे में। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, डेंस सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज और प्लांट्स, जो कि शेल्टर्ड कोस्टल एरियाज, एस्चुरीज, लगून्स या टाइडल फ्लैट्स में आपको देखने को मिलेंगे। रेड मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव, वाइट मैंग्रोव और बटनवुड, ये कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं मैंग्रोव की। और ये जो है हाई सॉल्ट लेवल्स को बर्दाश्त कर लेते हैं, हाँ, चाहे सॉल्ट सॉइल में हो चाहे वाटर में हो। और ये मड के ऊपर जनरली जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, और उनकी स्मॉल ओपनिंग्स भी होती हैं जिसके थ्रू ये जो है एयर को एक तरह से ब्रीथ करते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को सर्वाइव कर लेते हैं, लो ऑक्सीजन लेवल्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं, और लेकिन ये एक फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में को सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, 10 टाइम्स मोर कार्बन ये अपने में स्टोर कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, और लगभग 400 गुना तेज़ी से ये जो है अपने में कार्बन को स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, सो अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में लगभग हाफ ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर है पूरे साउथ एशिया का, और जो है 0.15% ऑफ कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया में मैंग्रोव्स ही हैं। वेस्ट बंगाल में ऑफ कोर्स हाईएस्ट परसेंटेज है मैंग्रोव कवर की। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is conservation of Western Ghats. This topic is important for your environment section. So a landslide in Maharashtra's Raigad district has claimed 27 lives, and this has brought back focus on the conservation of Western Ghats. And the opposition parties in Maharashtra are asking that what has happened to the Madhav Gadgil Committee report on ecologically sensitive zones in Western Ghats. So first of all, we need to understand what is Western Ghats. It is a mountain range which runs parallel to the western coast of Indian Peninsula. It traverses through the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, and it is also a UNESCO World Heritage Site. It is also one of the 36 biodiversity hotspots in the world. These ghats are home to high mountain forests also. So in 2010, the Environment Ministry appointed Western Ghats Ecology expert panel under Dr. Madhav Gadgil, and the aim of this panel was to study the impact of population pressure, climate change and development activities on Western Ghats. Its report was submitted in 2011, and the recommendations of this report said that entire region of Western Ghats should be declared as ecologically sensitive area, and 64% of these Western Ghats should be converted into ecologically sensitive zones. So all development activities were to stop, and similar existing projects must be decommissioned. So in all the zones, genetically modified crops should not be allowed. So it suggested that a bottom to top approach should be followed so that decentralization in decision making can be done, and more power should be given to local authorities. So it also recommended that a Western Ghats Ecology Authority should be established under the Environment Protection Act of 1986. But there was of course widespread criticism of this report. The states which constitute this Western Ghats opposed this report, is especially the state of Kerala, which was not comfortable with the idea of ban on sand mining and quarrying, transport infrastructure, wind energy projects, etc. So in 2012, fearing opposition from states, the then union government, the then union environment ministry, constituted another high-level working group on Western Ghats called the Kasturi Rangan Committee to replace this Gadgil Committee report. So what were the recommendations of Kasturi Rangan-led panel? So it said that only 37% of the area should be declared as ecologically sensitive, as against the 64% recommended by Gadgil Commission. And it also split the Western Ghats into cultural and natural. Okay, cultural lands only should be designated as an ecologically sensitive area. They
recommended red list, orange list, and green list. Red list means that there should be ban on the projects mentioned under the red list. Orange category means that these projects should be regulated. Green category projects were allowed, like agricultural and horticultural activities and certain commercial activities. So, what is the comparison between Gadgil and Kasturirangan report? The Gadgil report was pro-nature, pro-people report, and it was based on sound scientific information. It was made after feedback from central and state governments, Sila Parishads, Gram Panchayat, and people. Gadgil, that's why, criticized Kasturirangan report as faulty and unscientific. So in 2014, Ministry of Environment and Forests submitted that it is examining the recommendations of Kasturirangan-led panel, and they will not process the Gadgil report for further action. So in 2018, when there were Kerala floods, Gadgil claimed that if his report's recommendations were accepted, this would have lessened the severity of the floods and landslides in the state in 2018. So the next topic is Biological Diversity Amendment Bill of 2021. This topic is important for your environment section. Lok Sabha has recently passed the Biological Diversity Bill 2021, and you know that India has its commitments under Convention on Biological Diversity of 1992. So that's why we have passed the Biological Diversity Act of 2002, and this act regulates biological resources and associated traditional knowledge. For that, we have formulated a three-tier structure consisting of National Biodiversity Authority, state biodiversity boards, and at the state level, and the biodiversity management committees at the local body levels. So what are the changes being made under this amendment bill? So as per the current act, there is a need to take prior approval or intimation to the from the regulatory authority once you want to obtain biological resources which origin in India or occur in India, or the associated knowledge with them. But the bill amends this classification of entities, and it gives list of activities which require intimation, and it also adds certain exemptions for which no prior intimation would be required. The bill also says that approval for IPR, the approval for NBA is required only before the current act says that approval of NBA, the National Biodiversity Authority, is required before applying for IPR, but the new bill says that approval of NBA would be required only before the grant of IPR and not when you are applying for it. With respect to benefit sharing, under the current act, NBA is required to determine terms of benefit sharing while granting approval for various activities. The act also says that any benefit sharing provisions would be applicable to research, commercial utilization, etc. But the bill says that you only need this approval, or you only need benefit sharing if you are using it for if you are using the biological resources for commercial purposes and not for research, biosurvey, and bioutilization. So certain penalties, including the criminalization of offences, have also been decriminalized, and now there is no provision of jail. There would be penalty which would be between 1 lakh to 50 lakh rupees for failing to take approval or providing prior intimation to authorities for various activities. So this is also criticism of this bill, that this bill is removing the direct role of local bodies and benefit claimers based upon the mutually agreed terms. Now the bill would only will be focusing upon the BMC, the local biological management committees, which would be represented by NBA, and only the agreed terms between them and the benefit. The one who are taking the benefit of biological resources would be applicable. Okay, so similarly, there is a removal of prior informed consent. So under Nagoya Protocol, India is signatory, and it is committed to take approval of and involvement of indigenous and local communities. But under the new bill, there is no provision for a mechanism for obtaining prior informed consent of the local and indigenous communities. Similarly, the bill is also changing the adjudicating authority. Earlier, there was a judge who was adjudicating upon the provisions of this bill, this act. Now, the judge would be replaced by a government official. So the question arises whether it is appropriate to confer such discretion to a government official or not.
So the next topic is Starfire algorithm. This topic is important for your science and tech section. So recently, scientists at Raman Research Institute have developed an algorithm called Starfire. This would estimate the radio frequency interference emitted by FM radio stations, Wi-Fi networks, mobile towers, radar satellites, etc. So you know that it would also be capable of estimating and mapping the unwanted radio frequency interference signals in space. So that's why this algorithm would also be used in orbit selection for future missions. So what is radio frequency interference? So generally you know that radio frequency energy causes conduction or radiation, which can cause an electronic or electrical device to produce noise, and it also disrupts the normal functionality of a satellite due to the interference of radio astronomy. This can also disrupt and disturb the normal functioning of electronic and electrical devices. So that's why it is important to limit it when possible. So the next topic is UNESCO's Asia Pacific Cultural Heritage Award. This topic is important for your international relations and art and culture section. Recently, the Heritage Baikula railway station, which has been restored to its full glory, original glory, has received the UNESCO award. And this award is supported by UNESCO and Nek Tang Fong Charitable Foundation since 2021. And this award uh, is has been recognizing the achievement of private sector and public-private initiatives which have successfully conserved or restored structures, places and properties of heritage value. So Baikula railway station was originally built in 1853, and the first train of the country passed through this station almost 1.5 centuries ago, and it now recently it has been restored to its original glory. So the next topic is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. This topic is important for our governance section. Over one third of hospitals which have been empaneled under Ayushman Bharat remain inactive. So this is a cause of concern. Out of 27,000 hospitals, only about 18,700 remain active. So what is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? It is the world's largest health insurance program, which is fully financed by the government, and the beneficiaries of it are identified through socioeconomic and caste census of 2011 for both rural and urban areas. It provides a cover of 5 lakh rupees per family per year. It also provides cashless access to healthcare services. There is also no restriction on the family size, age or gender, and the scheme is being implemented by National Health Authority. So the next topic is African Union. This topic is important for your international relations. So India's G20 Sherpa has recently said that Indian Prime Minister's proposal to make the African Union a permanent member of G20 has received an overwhelming response from the grouping. So what is African Union? It is a continental body which consists of 55 member states, and it was officially launched in 2002, and it has replaced its predecessor, the Organization of African Unity, which was founded in 1963. It aims to strengthen political, economic, and social integration among the African countries, and its headquarters is situated in Addis Ababa, that is in Ethiopia. So the next topic is International Day for Conservation of Mangrove Ecosystem. This topic is important for our environment section. International Day for Conservation of the Mangrove Ecosystem is celebrated every year on 26th of July, and this day was adopted by the General Conference of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization in 2015 to raise awareness about the importance of mangrove ecosystems. So what are mangroves? These are dense salt tolerant trees and plants which thrive in the intertidal zones where land and sea meet. They are typically found in sheltered coastal areas, estuaries, lagoons, and tidal flats. So, some common species of these mangrove tree include red mangrove, black mangrove, white mangrove, and the buttonwood. And these trees or these plants are of specialized they have specialized adaptations. They can cope up with high salt levels in both soil and water, and they project generally above the mud, and they have small openings called lenticels through which they breathe, through which the air enters. They can survive extreme weather conditions, and they require low oxygen levels to survive. But they cannot survive freezing temperatures. Okay, so these mangrove forests can store 10 times more carbon per hectare than terrestrial forests, and also they can store up to 400% they can store carbon up to 400% faster than land-based tropical rainforests. If we look at the mangroves in India, then India contributes nearly half of the total mangrove cover in South Asia, and it is about 0.15% of the country's total geographical area. West Bengal has the highest percentage of mangrove cover in India. Okay.
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.